It's gonna be I'm sorry. It's gonna be NG Pros taken on GOW. And generally, GOW tend to have a great time in Kalahari. I want to see if NG Pros can give them a run for their money. Hell, let's see though. I mean, GOW, I guess the distance, especially with the area of the map, would give more advantage with that M500. So 2 on them already. Death being left behind and back up in there with Dian. So they might be able to take advantage, especially for side of NG Pros, only having that M1873 on them. There goes at Coda Pop. Our vision give them information. Hans managed to pull away, pulls that time turner, but Cropsy trying to go for a slice and dies with a backstab coming from Cropsy in there. But Team Boosters doesn't even make it as Demon hits that headshot as he's being picked up. Aztecs notes the Santino mannequin going past him, so he knows there's a potential to flank. He wants to get rid of Dan before he can make that switch, but Dan turns around that M500. Even Death chimes in with a little bit of damage, so that is the end of another NG Pros player. Anubhav, he's being looked at by Demon. He had no idea the Demon had that angle, and that leaves Manu all by himself. Deon gets rid of him, and GOW make quick work of NG Pros in the first round. Yeah, I mean, that was amazing, especially with how he positioned himself. And most of the time, if on the pistol round, you pull away from the rest of the teams, you will be taken down easily, but not for Demon. He got 3, if I'm not mistaken, from that engagement, made that 2, and the other 2 would be going into Dian's side. But they will have better weapons, and as early as this, Death will be bringing that VSK. Well, Dian right now might be flying like a G6 with that G36, and the same goes with 3 players from NG Pro. Like a G6, he's got to be ice cold and dump his opponents down in the bucket. GOW closing the distance. They get near the silos very, very quickly, but they also note that Cropsy is trying to cover his teammates from afar. Dan rushes him, but that G36, it's lethal. Cropsy gets the first elimination. They try to converge upon him, but as Hans is distracted, Aztec finds him. Perfect bait and switch. I love in the spread right now of NG Pros. I mean, they did make that bait and switch as well as isolated players from GOW. Now, speaking of isolation, Demon and Death right now is isolated, and 3 is already ganging up on Demon. There goes the takedown. Sliver of health left to Cropsy, but there's not so much that Death can do. And Blue will be closing in a bit, and Death will be stuck in the corner going against 4. He goes down without any fight at all, and it is an equalizer, and everything will be gathered by NG Pros. NG Pros, 2 great eliminations to begin the round. In fact, the first 2 eliminations did not even seem to be that much of a threat. Especially Hans gave up his life for free practically. And then they all converged upon that. Great spread from NG Pros. That's what happens when you've got all this information. You know exactly who to target. You know exactly how to isolate and exterminate your enemies. But in Council Hall, that information could very well be useless if GOW stick together and just completely roll over you like a dead ball. Yeah, let's see though. I mean, so far, information giver like Cropsy and Manu is putting in so much of damage. There goes Anubhav, almost being taken down. Triggered that Crimson Crush a little bit too early. And there goes a hit by Cropsy against Demon. Hands goes down as well. Aztec will be hiding out on this smoke. And Death right now, even the Shape Splitter might not save him. And he goes down from that Mag 7. Dion, the only one remaining, but not so much that he can do. Even if he stuck himself in a corner and heals up, the rest of the team of NG Pros will be rushing in. And there you have it. This might be it. Cropsy with a jump, nowhere to go, and Death, or Dian rather, meets his death. Great round from NG Pros. This was practically flawless. I loved how they once again went for a little bit of a bait and switch. Because you had Anubhav leading the charge, and then the moment he takes too much damage, he just activates the Crimson Crush. Lets Cropsy take over the damage dealing in his place. He dips back in cover. Cropsy jumps through that tiny doorway, and before his opponent has the chance to even adjust his crosshairs, Cropsy has already sliced his face off. I mean, it's tough, really. So when you start off with that side up close, like even if it's a surprise hit on that rush from that Tatsuya, you will be able to make that slash with that side, or a smash if it
if it is the hammer skin. But let's see though. Death right now. Winchester, Hans not slowing down. Move towards Aztec and a finisher. And here comes Anubab trying to go in with a Crimson Rush. Not best use for that. Oh my god. Still, Cropsy puts in the damage against Hans. It's a 3v2 situation. Cropsy might be picked up, but Manu will be brought down to his knees. And here comes GOW in a comeback with 3-man strong. Even only Hans has lost his weaponry. Oh my god. That was a difficult pill to swallow, because NG Pros, even though they got the first knock, they popped the time turner hoping to convert that knock into an elimination. Yeah. But then comes Death just charging in, and he provides such good backup. Him and Dion basically punish NG Pros for being all gathered up in that one area. And it seems like splitting up was working for NG Pros a lot better. Yeah, definitely. I mean, well, let's see though. I mean, GOW, I think they're catching up on whatever NG Pros is pulling off on the previous round, or previous round. So unless they switch it up from time to time, that's the only thing that they need to do to throw off how GOW is adapting to this. 2 in front already. Cyber airdrop already taken. GOW Demon with that Mag 7 Death for the flank, not even giving a chance for Anubab to be picked up. Oh, but GOW, if they both try to rush Ropsy at the same time, he can get shot from behind. Manu can't provide him backup. Manu was supposed to keep Ropsy safe, but now he's been dealt with as well. Oh, that was catastrophic for NG Pros. They had the script, they knew exactly where GOW were. And I thought because GOW is going in for that central cyber airdrop, NG Pros could surround them from every side, but then they just end up losing all the 1v1 duels. Aztec was busy looking towards the epicenter of that fight. He gets shot in the back of his head. Cropsy was relying on Aztec to make a move, and then Cropsy all of a sudden is all alone. Manu was trying to take care of the player afar, but now he has to shift attention and look towards the center, which wasn't even his responsibility to begin with. A complete breakdown of communications over there for NG Pros allows GOW to slip ahead. And great breakdown as well, Crips. I feel for Anubab from that moment because he was knocked down. No one can pick her up. And the moment that the first blood has been announced, the game is over. Yeah. It's tough for NG Pros from that moment. But right now, I guess Manu is... I guess the distraction coming from Anubab, though, is giving Manu that position, but Death is already waiting for him, and he got shot down, or needs to back away though. Speaking of shutting down, Hans, the first one that got shot down. Blue wall needs to go down as well, but Anubab slowly inching their way towards Dion. There goes the glue wall melter. Response is coming from Dion right now, and Flame Mirage, perfect, so that he can move away. I love that execution. Yeah, and even if they noted him moving down, they still need to be very careful about Death's position on that high ground. Manu also was on the high ground. He was supposed to deal with Death, but he has since dropped down, and that must be a mistake because Death now has easy access onto Cropsy. He gets the shot across. Manu can't even finish healing before Dion and Hans just pounce upon him. And once again, NG Pros, despite getting the first knock, are on the back foot. At least they have Death down on his knees. This time, no more revives for GOW. 2v3. They both know that Anubab and Aztec are stuck on the skeleton above. And as long as they deny them the angles, they should be able to keep NG Pros in check. No abilities used. A124 ability popped. But will that even help NG Pros? Because nobody from GOW is peeking them. No one's peeking them, but Dion... I mean, Demon was a distraction. Dion is bringing so much pressure with that Winchester. Now, Anubab has no choice, probably just to jump out or go with the shift of the circle. But that force of shift would give an opening for GOW to take shots at him. And even Demon knows that. And the moment he pops up on the other side, he will be down. And Demon beats Hans to it. 4-2 in a scoreline when we thought NG Pros can equalize it from that round. के लिए तो टाइगर्स को डोमिनेट कर रहे हैं. और एक और चीज यहाँ पे अनुभव ने ना यहाँ अपना ओरायन का स्किल वेस्ट नहीं किया लास्ट में. वो जानते थे कि अभी के लिए देखिए जो उनकी पोजीशन थी ये राउंड तो निकलने से रहा, इसीलिए अपना स्किल बचा के रखे आगे के राउंड के लिए.
बट आई विल से शुरुआत में अच्छा यूज़ किया था स्काउटिंग स्किल का इनसेन, जिस तरीके से पहले यहाँ पे जो ट्रेसिंग स्टेप्स थे वो इस्तेमाल किए थे क्लू के, और जैसे ही पोजीशन रिवील हुई क्रॉप्सी ने वापस से कोडा का ऑरोरा विजन इस्तेमाल करके एक नॉक निकाला था, बट वो सफिशिएंट नहीं था। पोजीशन क्योंकि हायर थी, जोन का प्रेशर था, तो बात बनी नहीं। बट अभी के लिए यहाँ पे क्या होगा, क्या ये राउंड निकाल पाएंगे? कमांड पोस्ट का ये एरिया होने वाला है। एस्टेक के हाथों में ग्रेनेड है, कुक किया और वो ग्रेनेड फेंका सीधा स्मोक वर्टेक्स की तरफ, बट खास कुछ डैमेज आया नहीं। एस्टेक रोटेशन लेने को तैयार है, हाथों में मैक्स 7 होने वाला है उनके, और क्या वो आगे जाएंगे? थ्रेबल फेंक के जा रहे हैं अनुभव, वो ट्रोगन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्रिम्सन क्रश का इस्तेमाल किया गया है और उनको डेथ पीछे से देख रहे हैं। चार्ज किया ध्यान ने और नॉकडाउन किया अनुभव को, फिर से अनुभव नॉक होंगे। एस्टेक वो भी आया एनिमी के एरिया में, वो भी काफी क्षति पहुंचाई जाएगी उनको भी। डेमन बैक साइड से हमला करेंगे, एस्टेक को भी टेक डाउन किया। मन्नू इज डाउन एज वेल। क्रॉप्सी ट्राई किया, इनफ नहीं था, एक और राउंड हाथ से जाता हुआ। ओ माय गॉड, GOW क्या कमाल खेल रही है, यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, अनुभव थोड़ा सा ओवर कमिट करते हुए एनिमी टेरिटरी में जा रहे हैं फर्स्ट फ्रैग निकालने के लिए, बट पासा पलट जा रहा है इनसेन पूरी तरीके से। और यही तो होता है, देखिए छोटी सी गलती नहीं है वो, ओवर कमिट अगर आप करेंगे तो फिर आपको सामने GOW Esports पनिश तो करेगी। हर एक मूव आपको सोच समझ के रखना पड़ेगा। अब हम मैच पॉइंट की तरफ आ चुके हैं। GOW Esports के लिए मैच पॉइंट है, वाइल ऑन दी अदर साइड NG Pros इस समय पे एक भारी डिफरेंस के साथ नजर आ रहे हैं। क्या NG Pros यहाँ पे पलटवार करके GOW Esports के खिलाफ ये राउंड विन कर पाएंगे? क्योंकि अब तो एक फ्रैग बहुत ज्यादा कीमती है। अनुभव ऑलरेडी शॉट्स फायर करते हुए डीमन और हंस को अपनी तरफ बुलाते हुए क्रॉस फायर सेटअप किया था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस फायर तो नहीं, बट क्रॉप्सी डियान को जरूर डाउन करेंगे। डाउन कर दिया गया, डेथ। चलिए अच्छी बात रही, यहाँ पे सैंटिनो के मैनिक्विन का इस्तेमाल करके डिस्टेंस पे निकल गए, बच निकले हैं, बट यहाँ पे डियान को तो एलिमिनेट किया। डीमन भी डाउन, डेथ और हांस इन दोनों के ऊपर अटैक बनाते हुए, हालांकि क्रॉप्स डाउन है क्रॉप्सी, बट यहाँ GOW के डेथ अब आखिरी खिलाड़ी, क्या ये कुछ कर पाएंगे? बहुत ज्यादा मुश्किल। सामने से आते हुए प्लेयर अनुभव और क्लोज में है एस्टेक, दोनों तरफ से वार। अनुभव यहाँ पे और आयन की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए डेथ ने डाउन तो किया था, लेकिन एस्टेक नहीं चूकेंगे। NG Pro said not this round। हार सकते थे मगर हारेंगे नहीं। NG Pros बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कोशिश थी, बट अब यही कोशिश अगले 2 और राउंड कर दे तो बराबरी पे आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अनुभव अपना अनुभव दिखाते हुए, जो गलती पिछली बार हुई एक्चुअली वो क्या करना चाहते थे इस बार वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। 2 एलिमिनेशन निकाले थे उन्होंने और इस बार जीत अपनी टीम के खाते में डाली है। GOW इस बार तैयार है जीतने के लिए, वहीं पे NG Pros रोकने को भी है दूसरे छोर पे तैयार। ये मुकाबला है सेंटा कैटरीना का, और अभी के लिए देखिए जो स्मोक वर्टेक्स है वो बनाया जा चुका है, सुपर बॉर्न फायर का भी इस्तेमाल किया गया है, और साइबर एयर ड्रॉप उसको कैप्चर करना जरूरी है। GOW के पास 2 साइबर एयर ड्रॉप पॉइंट्स होने वाले हैं, वहीं पे NG के पास 1। अभी नीचे जाने को तैयार है और हमला किया, नॉक किया हंस को, एलिमिनेशन कंफर्म किया जाएगा। और अभी डेमन के ऊपर भी हमला करने को बेताब ये खिलाड़ी, डेथ नॉक है और अभी जीत की दरकार है यहाँ पे NG Pros की तरफ से। एडवांटेज उनके पास होने वाला है, स्टीयर चढ़ के अभी जाते हुए स्पॉट भी किया खिलाड़ियों को। डेमन इकलौते खिलाड़ी बचे हुए हैं, उनको भी यहाँ पे ढूंढा जा रहा है कि वो है कहाँ पे, और फाइनली उनका शॉट आया, उन्होंने इनिशिएट किया, पनिश किया गया रिवर्स में। एक और राउंड NG Pros के खाते में जाता हुआ। NG Pros ये सफर है कंटेंडर से चैंपियन बनने का, और सफर में सबसे पहली रोक है वियतनामी जायंट टीम GOW। NG Pros आज आपकी अग्नि परीक्षा है, आज तक जितना कुछ सीखा, जितना कुछ जाना, वो सब कुछ झोंक दिए, और क्या यहाँ पे जीत हासिल कर पाएंगे? बड़ा सवाल है, क्या ये वो आखिरी राउंड होगा या फिर NG Pros का एक कमबैक देखेंगे इनसे? हम देखते देखते हम 5-4 पे आ गए, जहां पे GOW Esports दहलीज पे आ गई थी जीत के, वहीं से उस दहलीज का रास्ता रोके हुए NG Pros के खिलाड़ी खड़े हैं। ये विश्वास सिर्फ इन खिलाड़ियों का नहीं, ये विश्वास है नॉन स्टॉप गेमिंग का, ये विश्वास है लाखों जनता का जो NG Pros के फैंस हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे NG Pros, इनके पास बेटर साइड आई वुड से, बट डेथ इनकी स्नाइपिंग को कम नहीं आंक सकते। ये भी एक अच्छी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, बट अब देखते हैं कि डेथ के खिलाफ मनु क्या कर पाते हैं। दोनों स्नाइपर्स अपनी पोजीशन पे तैनात है, लेकिन अब NG Pros को जरूरत है इस समय पे फ्रैग निकालने की। डियान अभी के लिए कवर पे, डीमन भी एक अच्छी पोजीशन पे नजर आ रहे हैं, शॉट्स एक्सचेंज होते हुए
GW Esports, they don't want to make any mistake. They've already realized कि एक छोटी सी गलती और उसका खामियाजा बहुत बड़ा होता है। एनजी प्रोस के क्रॉप्सी अपनी पोजीशन पे बरकरार और एस्टेक यहाँ पे डिस्टेंस से शॉट्स लगाते हुए डेथ को सप्रेस करते हुए डैमेज बहुत ज्यादा दिया था और डेथ को अपनी पोजीशन चेंज करने पे मजबूर कर दिया। देखिए मनु ने एक अच्छा खासा प्रेशर बनाया, डेथ वहां से उतरे हाइट से और उसके बाद एस्टेक ने उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। हालांकि यहाँ पे फ्रीजनेस का भी प्रयोग किया जा रहा है। मनु की पोजीशन रिवील्ड है, डीमन मनु को सप्रेस करना चाहते हैं और ऊपर से एस्टेक और अनुभव ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हुए क्या ग्रेनेड सही जगह पे फटेगा? जी नहीं, अभी के लिए तो नहीं। और यहाँ पे बचते हुए डीमन नीचे उतर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि एनजी प्रोस के पास अब मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा एडवांटेज है हाइट का, बट सर्कल भी क्लोज इन होता हुआ और अब एनजी प्रोस के खिलाड़ियों को भी नीचे उतरना पड़ेगा। हांस को डाउन किया गया है, डियान ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे। यहाँ पे एनजी प्रोस वापस से कमाल करते हुए 5-2 से लेके स्कोर 5-5 कर दिया है। एनजी प्रोस नाम है और अब मैच पॉइंट के दरवाजे पे ये दोनों टीम्स खड़ी है। कौन सी टीम बाजी मारेगी? क्या ये वुल्व्स बाजी मारेंगे या फिर एनजी प्रोस के टाइगर्स? जो जीत से सीख ना ले वो जीत का हकदार नहीं, और इस बार सेम ही टेरिटरी थी मैमथ पे। यहाँ पे एनजी प्रोस ने बाजी मारी, लेकिन अभी क्या होने वाला है ये है वो आखिरी राउंड जो फैसला करेगा कि कौन यहाँ पे आगे जाएगा। एनजी प्रोस क्या पहला जो गेम है वो जीतेगी? बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चार्ज वहां पे किया गया है, अनुभव ने पहले ही यहाँ पे हंस को नॉक किया। डेमन वो क्रॉप्सी को गिराएंगे और अभी रिवाइवल करना होगा। हंस नॉक है, यहाँ पे थ्रोएबल का इस्तेमाल किया गया, वॉल्स लगाई गई है, यहाँ पे उनको पूरी तरीके से डिनाई किया गया आके आने से। शाइन्स के नीचे है, डेथ नॉक है, डियान को भी धराशायी किया। डेमन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, 1 वर्सेस 3 का सिचुएशन उनके लिए होने वाला है। मन्नू उन्होंने स्पॉट किया, घेरा गया और यहाँ पे पहला गेम एनजी प्रोस करेगी एक एपिक कमबैक।